सुप्रभात बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कैसे हो आप लोग? ठीक। तो आज हम लोग ये जो पार्ट 9 है टिकट एल्बम, आज हम लोग इसका कंक्लूजन देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो पिछले सेशन में मैंने जो पढ़ाया है तो आप लोग एक बार उसको हम लोग उसको रिवाइज करेंगे। ठीक है। इस कहानी के जो रचयिता है उनका नाम है सुंदरा रामास्वामी। एक्चुअली ये जो कहानी है ये तमिल की कहानी है। तो सुंदर रामास्वामी जो रचे है तो लिखा है तो उसको ट्रांसलेट किया है। तो कौन है हम लोग देखेंगे। उनका जो नाम है अय्यर है। तो वो भी हम लोग देखेंगे इस कहानी का कंक्लूजन के बाद। ठीक है बच्चों, तो इस कहानी में कितने कैरेक्टर्स है? हाउ मेनी कैरेक्टर्स वी आर हैविंग इन दिस स्टोरी माँ? So two characters are there. So one is Nagarajan, another one is Rajappa. So जो पिछले सेशन तक जो कहानी है मैं फिर से आप लोगों को एक बार दोहरा देती हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये राजप्पा और नागराजन दोनों दोस्त है। तो ये दोनों एक ही कक्षा के हैं। राजप्पा पहले से जो ट्रैवलिंग टिकट्स है वो सभी को इकट्ठा करता था, यानी कि दूसरे देशों के टिकट्स। जैसे कि मैंने पिछले सेशन में बताया था, यूएस के टिकट, यूके के टिकट, फ्रांस का टिकट, जर्मनी का टिकट, ये सब उसने जमा करता था। तो सब जमा करके उसे एक एल्बम बनाया था। फिर एल्बम बनाने के बाद सभी बच्चों को वो दिखा रहा था। तो सब लोग बहुत अच्छे से देखते थे और राजप्पा को बहुत अप्रिशिएट करते थे। अच्छा सा बनाया, अच्छा है, मुझे दिखाओ, ऐसे पूछते थे बच्चे। तो वो स्कूल में फेमस हो गया। उसके बाद सडनली क्या हो गया, नागराजन के अंकल सिंगापुर में रहते थे। तो वहाँ से उन्होंने एक एल्बम भिजवाया, जैसे कि टिकट एल्बम ही भिजवाया था। तो वो दिखने में बहुत सुंदर था और उसके एल्बम के ऊपर जो पहला पेज है उसके ऊपर कुछ कोड भी था और उसका नाम भी लिखा हुआ था। तो सब लोग राजप्पा के एल्बम को भूल गए। अब सब लोग फिर नागराजन का एल्बम पूछना शुरू किया और नागराजन बैठ के हर एक जो आता है उनके घर पे आता है या नहीं तो स्कूल में जो बच्चे होते हैं सभी को वो खुद नहीं देता था, वो बैठ के सभी को दिखाता था। इवन दो ही यूज्ड टू गिव टू द गर्ल्स आल्सो टू सी द एल्बम। तो सब लोग नागराजन के एल्बम की तारीफ कर रहे थे। सो एवरीबडी आर डूइंग द अप्रिसिएशन ऑफ नागराजन एल्बम। एट द टाइम दिस राजप्पा ही गॉट jealous. So suddenly what he did, this much struggle I did for collecting the tickets, even though I am paying some amount and I am cheating somebody and I am taking the tickets, but now suddenly this Nagarajan he came and now he is getting the name like that, he thought, and he felt very bad on that, and he somewhere he got the angry also. So at the time suddenly what he did, he went Nagarajan's house and Nagarajan he kept that album inside the drawer and he put the lock also to that. So he went to his room, Nagarajan's room directly, and sometime he sat there and he talked with her, with his Nagarajan's sister. Suddenly he started searching. After when she left that place, no, at the time he started searching where is that album. So उसने ढूंढ कर एल्बम निकाल ली। मैं इसके ऊपर चाबी थी तो उस ड्रॉवर को ओपन करा, फिर ड्रॉवर के ऊपर ही, ड्रॉवर के अंदर ऊपर ही उसका एल्बम पड़ा हुआ था। तो राजप्पा उस एल्बम को लेकर गया। तब नागराजन दूसरे शहर गया अपू के साथ। तो अपू के साथ गया था। तो फिर वहाँ पर क्या, फिर वो आकर नागराजन लौट कर आया तो वहाँ पर एल्बम नहीं था। तो ये बात अपू को पता चली तो अपू तुरंत राजप्पा के पास आया। क्यों, राजप्पा और नागराजन भी अच्छे दोस्त थे इसलिए वो आ गया और बताया कि ऐसा हो गया है, नागराजन का एल्बम नहीं दिखाई दे रहा है। तो तभी राजप्पा ने उस एल्बम को उठाकर लेकर आकर जो अलमारी है ना, अलमारी में जो किताबें रखते हैं उसके पिछवाड़े में उसने छिपा दिया। तो उसको टेंस था कि कोई ना कोई सोचेगा कि मैं उठा लिया, ऐसा
कुछ डर था। तो उस दिन आपू जब बताया था तो नागराजन सॉरी राजप्पा खामोश था। तो आपू चला गया तो राजप्पा फिर से वो अंदर आ गया और दरवाजे को क्लोज किया। फिर जाकर किताब है या नहीं चेक कर फिर से वो बैठ गया। तो थोड़ी देर के बाद उसने क्या किया, सोने का टाइम आ गया तो कुछ भी खाया नहीं पिया नहीं, सिर्फ कमरे में बैठा हुआ था। तो वो एल्बम निकाल कर फिर डोर डोर क्लोज करके एल्बम निकाल कर उसने अपने तकिए के नीचे अंडर द पिल्लो ही केप्ट एंड ही स्लेप्ट बट ही डिडंट गेट एनी स्लीप। सो फुल होल नाइट some fear maybe he is having, so that's why he was not got the sleep. So on the next day morning, again up morning only Appu came and he started saying now Nagarajan's father, he is going to give the complaint in the police station because Nagarajan's father, he is working in the DSP office, so he knew the police, so they can come anytime and they can check like that. He started saying because I think Appu is having doubt because after they left that place, Rajappa only came now, so that's why he thought like that, and he started saying all these things. But inside Rajappa, he is getting fear, even though he is by seeing he is not looking like that, he is having fear. So quietly he is listening what what Appu is saying. So at the time suddenly Appu's brother, he came, and morning only you came here, come to home like that, he called. And at the time Appu, he left that place and he went to his house. After that again Nagarajan came there. Okay, so much time the door was knocking, but Rajappa, he thought maybe some police, they came off for searching like that, he thought. Again he went and he checked that album, everything. After that knocking only, the door knocking sound, it is coming outside the door. So mother at last she shouted, why you are not going, you can go and open the door, no, like this she said. Still Rajappa, he is in the bedroom. After that, when mother was left that place and when she went to open the door, at that time immediately he ran, and he ran to the bathroom and he went and he hid it there with the album. So there one fire, maybe there one stove it is there, so on that he put that album, so that album was fired. Okay, so वो album जल गया. तो अब हम लोग देखते हैं कंटिन्यूशन स्टोरी. So after that this Nagarajan came. Now at the time mother, she went and she opened the door. At the time Nagarajan is there. So Nagarajan, your friend came, Rajappa, your friend came like that. Rajappa's mother said at the time, Rajappa, he behaved like as a, he took the bath and he wore the towel and he came out and he put his dress and started asking. At the time, in meanwhile, this Nagarajan, he went to the Rajappa's room and he sat there in the chair. At the time, Nagarajan started saying like this, I lost my album, like that he said, very sad, with a sad face. At the time, Rajappa, he asked, where you kept that album, like that he asked. At the time, this Nagarajan said, I kept in my drawer, like that he said. Now we'll see the continuation of this story. Have you all understood, no children, up to this much? Come, we'll see the continuation. नागराजन की आंखों में आंसू आ गए. राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछ ली. So at the time when this Rajappa, he started asking that questions, where you kept, like that he started asking. No, at the time in the Nagarajan's eyes the tears are coming. So Rajappa will see, he feel bad like that, maybe he thought, so that's why immediately he wiped his tears from his eyes. रो मत यार. एट द टाइम राजप्पा से डोंट क्राई. राजप्पा ने उसे पुचकारा. एट द टाइम राजप्पा से डोंट क्राई, लाइक दैट ही डिड. वे फफक कर रो दिया. एट द टाइम ही स्टार्टेड क्राइंग. राजप्पा झट नीचे उतर कर गया. एट द टाइम राजप्पा इमीडिएटली ही वेंट डाउन.
1 मिनट में वे ऊपर नागराजन के सामने था. At the time, immediately within 1 minute, he came in front of the नागराजन again. उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था. At that time, in his hands, this Rajappa's hands, Rajappa's album is there. लो, ये रहा मेरा एल्बम. टेक, सी, दिस इज माई एल्बम. लाइक दैट ही सेड. टेक दिस वन. लाइक दैट ही सेड. अब इसे तुम रख लो. नाउ यू कैन कीप विथ यू. ऐसे क्यों देख रहे हो? वाई यू आर सीइंग. मजाक नहीं कर रहा. आई एम नॉट डूइंग फन विथ यू. सच कहता हूँ, इसे अब तुम रख लो. रियली आई एम टेलिंग यू टेक दिस एल्बम नाउ. यू कैन यू कीप विथ यू ओनली. लाइक दैट राजप्पा सेड टू नागराजन. बहला रहे हो यार. सो बहला रहे हो यार. एट द टाइम नागराजन सेड यू आर चेंजिंग माई मूड. लाइक दैट ही सेड. नागराजन को जैसे यकीन नहीं आया. सो हाउ ही सेड, बिकॉज ही इज नॉट बिलीविंग. लाइक दैट वाई यू आर मेकिंग फन विथ मी. आई एम नॉट बिलीविंग. लाइक दैट नागराजन सेड टू राजप्पा. नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूँ, रख लो. एट द टाइम राजप्पा सेड नो, रियली आई एम टेलिंग यू टेक दिस एल्बम एंड यू कीप विथ यू. लाइक दैट राजप्पा सेड टू नागराजन. राजप्पा भला अपना एल्बम उससे दे दे. कैसा चमत्कार है. नागराजन को अब भी यकीन नहीं आ रहा था. इवन दो राजप्पा anyhow he gave the album, but he is getting surprised to Nagarajan. So Nagarajan still he is not believing. पर राजप्पा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था. बट राजप्पा is again and again that one only. I am telling you take it. I am giving this album. You keep this album with you only. Like that again and again राजप्पा is telling to the राजप्पा. उसका गला भर आया था. At that time his voice it became very weak, which means he is getting cry and he is somewhere he is feeling happy. So that's why both are mixing, and at the time that voice it became very weak. ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे. At the time he said, okay, I'll keep this thing, but now what you are going to do. Like that Nagarajan asked to Rajappa. मुझे नहीं चाहिए. I don't want this thing. Like that Rajappa said. क्यों, तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए. So at the time Nagarajan asked, Rajappa said no, I don't want. Like that he said no. At the time Nagarajan asked to Rajappa, why you don't want these tickets. Like that he asked. Nahi, no. Like that Rajappa said. पर तुम कैसे रहोगे बगैर किसी टिकट के. सो नाउ हाउ यू कैन बी विदाउट हैविंग द टिकट्स और अदरवाइज विदाउट हैविंग द टिकट एल्बम. लाइक दैट राजप्पा आस्क्ड. रोता क्यों है यार. एट द टाइम अगेन Rajappa said, why you are crying my friend. Like that he asked. ले, इस एल्बम को तू ही रख ले. So Rajappa said, take this one, keep with you. Like that he said. इतनी मेहनत की है तूने. नागराजन बोला. So much struggle you did. So much struggle you did for this making ticket album. Why you are giving. Like that Nagarajan asked. नहीं, तुम रख लो. So at the time Rajappa said no, you keep it with you. लेकर चले जाओ. You take this one and you can go. Like that he said. जाओ, चले जाओ यहाँ से. वह चीखा और फुट फुट कर रो दिया. At the time he said go from here. Like that he said, and he shouted, and at last he also started crying. नागराजन की समझ में कुछ नहीं आया. At the time नागराजन he was not understood anything. वे एल्बम लेकर नीचे उतर गया. At the time he took that album and he came down. कमीज से आंखें पोंछता हुआ राजप्पा भी नीचे उतर आया. At the time राजप्पा he also wiped his tears with his shirt and he also came down. दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए. So both are up to door. They came together.
बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूं? एट द टाइम नागराजन सेड टू राजप्पा, थैंक यू वेरी मच, नाउ कैन आई गो टू माई होम लाइक दैट ही आस्क्ड. नागराजन सीढ़ियाँ उतरने लगा. सो ही आस्क्ड नागराजन, ही इज गेटिंग डाउन द स्टेप्स. सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा. एट द टाइम राजप्पा ही कॉल्ड, लिसन राजू लाइक दैट ही सेड. नागराजन ने उसे पलटकर देखा. एट द टाइम नागराजन ही टर्न्ड एंड ही saw the राजप्पा's फेस. ओके, एल्बम दे दो, मैं आज रात जी भरकर इसे देखना चाहता हूँ. एट द टाइम अगेन राजप्पा सेड, गिव दैट एल्बम टुडे होल नाइट, आई वांट टू सी विथ माय फुल आईज. I want to see with my whole album like that he said. कल सुबह तुम्हें दे जाऊंगा. Tomorrow morning I will come and I'll give like that राजप्पा said. ठीक है, नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दी और चला गया. So at that time okay like that नागराजन said and he gave that album and he went from that place. राजप्पा ऊपर आया. अगेन राजप्पा ही केम अप. उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रो दिया. सो आफ्टर दैट he went first floor and he went in his room and he closed the door. After that he took that album and he hugged and he started crying. So this is the story of Ticket Album. Okay children, so what we had learned from this story? So if suppose when we are getting angry, at that time we have to be quiet. Okay, so in that anger mode what we are doing, that one really we don't know that. So in that anger we are getting like as a jealous feeling we are getting, and the next no something we have to do, something we have to do like that we are thinking. Okay, so when we are getting angry we have to be control ourselves and we have to sit for some time quietly. After that only we have to think on that and what decision it will taking, it is going to take, that one is helpful for us and it is giving the decision like as good decision. Okay, so when we are in anger, when we are in angry, at the time we should not do any wrong things. For that purpose only this story they had given like as our lesson in our Hindi chapter. So we have to control ourselves when we are getting angry. We have to be quiet. After that only we can react. But when we are in angry, we should not react. We should not give any answer to anybody. Okay, so at the time in that mood what we are doing, that one we don't know. After happening that thing again we are feeling very bad, why we had did like that. Okay, that feel we should not take. So that's why when we are getting angry, so to everyone I am saying we have to be quiet. After that only we have to react, and after that only what we have to do on that thing, at the time we can decide. When we are in cool mood, as we are thinking again that what incident that was happened, so at that time we are thinking, oh this one is very silly, no need to take in mind, like that we are thinking. Okay, so to everyone I am telling, when we are in angry mode we should not give the reply, we should not give the answer, and we should not take any decision in that mode. Okay children, so this story actually written by the Sundara Ramaswamy, and the next in Tamil also it was translated. So that writer name is Sumati Iyer. So at first we have to write who is the writer of this Ticket Album. Now Sundara Ramaswamy only we have to write, because we no need to write this Tamil Anuvad. Okay, which means Tamil translation. We no need to write, only Sundara Ramaswamy only we have to write. For that reason only at first also I told this story was written by the Sundara Ramaswamy. Have you all understood now children? Nice story. So this one is one lesson for us. Okay, this one is one moral for us. We have to be in patience. Okay children. Okay, so in the next session we'll see the exercise of this lesson. चलिए बच्चों,
हम लोग अगले सेशन में इसका जो किताब का जो एक्सरसाइज है उसको देखेंगे। धन्यवाद बच्चों। वंस यू गो एंड डू द रीडिंग प्रैक्टिस ऑफ दिस लेसन, जस्ट यू रीड, सिट एंड read. So at the time, how to read, how to pronounce everything, you people, you can know that thing. And after going the higher sessions, nobody are going to read the question paper. You have to read and you have to find the answers, everything. Okay, so that's why do the reading practice and understand what questions they are going to ask. Easily you can give the answer. So that's why I'm telling, do the reading practice. Thank you all of you. And art integration activity, art integration activity you have to submit on or before January 4th.